Today in algebra, our topic is algebraic expressions. Okay. In this video, I will tell you what are algebraic expressions and parts of algebra. A quick recap. As in last video, I told you that literals and letters used to represent numbers. Their value may change, so they are called variables. Also, for example, X, Y, Z, A, B, etc. हम लोग कभी कभी अननोन वैल्यूज के लिए कुछ लेटर्स को यूज करते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती और चेंज होती है. Use of letters will help us to write rules and formulas in general way. Letters help us to determine the unknown values. Okay. Now, what are constant and variables? The values of literals changes according to the situations. So literals are called variables. Different situations में literals की values भी different हो जाती है, change हो जाती है. So they are called variables. Variables are represented by English alphabets. A, B, P, Q, R, X, Y, Z. कोई भी आप alphabets ले सकते हैं. Since the number in arithmetic always represent the same quantity, even in different situations, so the numbers are called constants. Means जो हम counting numbers use करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, वो हर situation में उनकी value same रहती है. अगर हमने 2 लिखा है, तो वो 2 ही रहेगा किसी भी situation में हम उसे अगर लिखते हैं तो. ठीक है. So they are called constant. Constant का मतलब होता है जिसमें कोई change नहीं होता, जो stable रहता है, स्थिर रहता है. So variables do not have fixed value, but constants have fixed values. What is algebra? A formula is written with the help of literals, constants and 4 basic operations. Means addition, subtraction, multiplication and division. जब हम कोई formula लिखते हैं literals को use करके constants और 4 basic operations जो है हमारे plus, minus, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनका यूज करके जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं वो अलजेब्रा होता है. एक्चुअली यूजिंग लिटरल्स इन जनरलाइज्ड रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक इज नथिंग बट अलजेब्रा. ओके. नाउ व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? Algebraic expressions including constants and variables combined by arithmetical operations are called algebraic expressions. अभी मैं आपको इसके आगे एग्जांपल्स बताऊंगी. तो ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं और जिन्हें हम अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो Now, what is algebraic term? First of all, algebraic term is the part of expression separated by a plus or minus sign are called the terms of an expression. जैसे मैंने ये expression ली 7xy minus 7y plus 3z. Now I will tell you what are the terms of this expression. First term 7xy. Okay. Next minus 7y. Next 3z. You can see signs are also included in terms. हम signs को ignore नहीं करेंगे. Actually plus sign is not necessary to write. So मैंने यहाँ किसी पॉजिटिव टर्म के साथ हमने प्लस का साइन नहीं लगाया है. But माइनस साइन इज नेवर इग्नोर. लेकिन माइनस साइन को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, उसको हमेशा हमें साथ रखना होता है. Four fundamental operations in algebra
means plus, minus, multiplication and division. First of all, there are literals and there may be literal and number. या तो हम लिटरल्स में ये ऑपरेशन लगा सकते हैं या लिटरल और नंबर दोनों को यूज करके हम इन ऑपरेशंस को लगाएंगे। जैसे अगर मैं एडिशन की बात करूं तो एज वी कैन ऐड नंबर्स 2 + 3 = 5 कर सकते हैं ना हम लोग। तो इसी तरीके से हम लिटरल्स को भी ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे, sum of a and b, here a and b are literals, a plus b and sum of z and 10, z plus 10, subtraction, as we can find the difference of numbers, means 5 minus 3 is equal to 2. Similarly, we can find the difference of literals. Here a and b are literals. So difference of a and b will be a minus b, and difference of x and 4 will be x minus 4. Now its multiplication. As we know, 5 into 3 is equal to 15. Hence, we can find the product or multiplication of a and b, that is a into b, product of b and 7, b into 7 is equal to 7b. Now division, as we can find the quotient of numbers, means 15 divided by 3 will be 5. So quotient of a and b will be a divided by b, and quotient of a and 5 will be a divided by 5 is equal to a upon 5. Now you should know that how do the operations are applied on the literals and numbers. Sum of same literals means अगर हम same literals को add करते हैं, a plus a will be 2a, but sum of different literals will be a plus b. ये सॉल्व नहीं होंगे, इसको हम a plus b ही लिखेंगे। Now difference of same literals, a minus a equal to 0. You know, when we subtract the same quantity from the same, so answer will be 0. So a minus a is equal to 0. But sum of different literals, a minus b, product of same literals, a multiplied by a is equal to a square. आप यहाँ देख रहे हैं a के ऊपर हमने 2 लिखा है, this is the power, a square, a raised to power 2, or it is called a square. Now a multiplied 3 times, a multiply a multiply a, it will be a raised to power 3, or called a cube, a cube. If we multiply a 4 times, it will be a raised to power 4. But product of different literals, a multiply b is equal to ab. मल्टीप्लाई का साइन, अगर हमारे दो लिटरल्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इट इज अंडरस्टूड दैट दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। ओके, यहाँ a इंटू बी इज इक्वल टू मैंने लिखा ए बी में कोई साइन नहीं नजर आ रहा, इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। डिवीजन ऑफ सेम लिटरल्स, a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1। जब हम सेम लिटरल को उसी से ही डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आएगा। But division of different literals, a divided by b is equal to a upon b. Product of literal and a number, a multiplied by 5 is equal to
5a, z into 7 is equal to 7z, 3 into y is equal to 3y. तो आप यहाँ नोटिस कीजिए, जब भी हम एक लिटरल और नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर में नंबर को पहले लिखा जाता है. जैसे a मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5a, नॉट a5. ओके, z into 7, 7z, not z7. Similarly, 3 into y is equal to 3y. Division of a literal and a number. A divided by 4 will be a upon 4. 10 divided by b is equal to 10 upon b. Now, points to be remembered. Variables change their values according to situations. Constants are fixed values and do not change in any situation. Using literals in generalized results of arithmetic is algebra. Expressions including constants and variables combined by arithmetical operations are called algebraic expressions. Parts of expressions separated by a plus or minus sign are called the terms of the expression. Hence, here our topic has finished. See you in the next video. Take care. Bye bye. Hello students. Today in algebra I will tell you about constants and coefficients, terms of an expressions, what are expressions. Okay. First of all, in last video we have learned about variables. That means they can change their values according to situations. So they are called variables. Constants are fixed values and do not change in any situation. Constants जो है वो fixed values होती हैं, उनमें कोई change नहीं होता उनकी value में. Using literals in generalized results of arithmetic is algebra. Algebra actually होता क्या है? जब हम किन्हीं literals को use करके एक generalized formula create करते हैं, वो हमारा algebra होता है. Expressions including constants and variables combined by arithmetical operations are called algebraic expressions. Last video में मैंने बताया था कि expressions, algebraic expressions क्या होती हैं. जब हम constants, variables और arithmetical operations को combine करके एक expression बनाते हैं, वो हमारी algebraic expression होती है. Parts of expressions separated by a plus or minus sign are called the terms of the expressions. Okay. Algebraic expression. Here you can see it is an algebraic expression. 3x plus 5y minus 9. Okay. In this expression I will tell you all the parts of the expression. First of all, x and y in red color are here. So these are variables or literals. Variables or literals. 3 and 5. These are coefficients as they are multiple of variables. ये x और y जो हमारे variables हैं, इनके साथ जो multiply में आता है, x के साथ 3 multiply हो रहा है और y के साथ 5, then these two are coefficients. 3 is the coefficient of x and 5 is the coefficient of y. Okay. Now, as I say, x and y are variables because they are literals and have no fixed value. Okay. इनकी कोई fixed value नहीं होती, इसलिए ये variables होते हैं.
Now here 9, actually -9 is constant as they have fixed value. 9 की वैल्यू हर सिचुएशन में 9 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती, तो इसलिए ये कांस्टेंट होती है और इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। नाउ टर्म्स, यहाँ टर्म्स है 3x 5y -9, है ना, as these are parts of the expression, so these are the terms of an expression. Types of expressions, first of all monomial. What are monomials? An expression with only one term is called a monomial. जिस expression में सिर्फ single term होती है वो monomial होती है। जैसे यहाँ मैंने कुछ examples दिए हैं, 2xy -5m², 3abc, 4z³ 9. These are separated by commas. इनके बीच में comma लगा हुआ है. It means they are all separate expressions and have only one term. So these are monomials. Now, what are binomials? An expression with two terms is called a binomial. जिस expression में दो terms होती हैं वो binomial होता है. जैसे यहाँ example में 7x -y², it is binomial. Again in this green color 3mn plus 5n, these are binomial. Here are two terms. In first expression they are separated by minus sign, and in second expression they are separated by plus sign. Similarly 4z³ plus 9 is also a binomial. Now trinomials. An expression with three terms is called a trinomial. In this example you can see here are three terms, 2xy -5z² are 9. So these are trinomial. 3m plus n -7, it is also a trinomial. And if any expression has one or more terms is called a polynomial. यानी इन सबको हम polynomial भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। Here are some more examples. You can see in first, here is 2x. It is monomial as it has only one term. Now 2x plus 3y. Here are two terms, 1 and 2, separated by plus sign. So it is binomial because it has only two terms. Next 2x² plus 3x plus 5. It has 1, 2 and 3 terms. So it is called trinomial. 3 terms. Now it has more than 3 terms. 1, 2, 3, 4. It has more than 3 terms. So it is called polynomial. Got it? Now coefficients. A numerical or constant quantity placed before and multiplying the variable in an algebraic expression is called coefficient. देखो यहाँ पर जैसे for example 3 is the coefficient of x in 3x, 5 is the coefficient of y in 5y. यहाँ पर 5 y से पहले लिखा गया है before the variable and multiplying the variable, ठीक है। In this expression 3x plus 5y minus 9, 3 and 5 are the coefficients. Coefficient is a number used to multiply a variable. Now 9 is constant, okay, because it has fixed value. Constant terms are those terms of an expression which do not have any literal factor, जिनका कोई literal factor नहीं होता,
ठीक है, यहाँ 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट में डिफरेंस होता है। हालांकि देखने में तो 3, 5, 9 दीज आर नंबर्स, ओके, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। Coefficient means they are multiplied with any literal or variable, but constant has no literal factor or variable. ठीक है, 9 के साथ कोई भी x, y, z, a, b, c, d कुछ नहीं है, जबकि यहाँ 3 के साथ x है और 5 के साथ y है. They are multiplying with a variable. So these are coefficient. 3 and 5 are coefficients, but 9 is constant. Constant terms have fixed values. You know very well. Now, like and unlike terms. Like terms that have the same variable and the same exponent or powers are called like terms. For example, 3y square minus 2 by 3y square are like terms. यहाँ आप देखो सब में एक तो y आ रहा है और सभी में y की पावर 2 है, y raised to power 2. So these are like terms. Okay. क्या कंडीशन है लाइक टर्म्स की? टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल, हियर वेरिएबल इज y in all terms and having the same power 2, so it is representing the like terms. अब unlike terms, terms that have the different variables or different exponents or powers. For example, 3y square 2y minus 3x. यहाँ देखो हालांकि वेरिएबल सेम है, 3y स्क्वायर में भी y है, 2y में भी y है, पर इनकी पावर सेम नहीं है। फर्स्ट वाले में पावर 2 है, सेकंड में 1 है, सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। और यहाँ तो वेरिएबल ही डिफरेंट हो गया, तो ये तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, now finding the value of an expression, we have learned that in an algebraic expression, letters can stand for numbers. When we substitute a specific value for each variable and then perform the operations, it is called evaluating the expression. हमने algebraic expression सीखे, हमें पता है algebraic expressions में जो letters होते हैं वो numbers के place पर हम लोग उनको use करते हैं, unknown numbers के place पर। तो अगर उन variables की एक specific value तो होती है, तो वही हम वैल्यू जब हम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू यानी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, यानी वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब करने के बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू आती है वही उस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन. ओके, तो for example, let's evaluate the expression 3y plus 2y when 5 is equal to y. Means value of y is 5 here. So we will put the value of y in the expression. तो first step क्या है हमारा? हम y की value जो 5 given है हमें वो इस expression में put करेंगे. See, it will be like this. 3 into 5 plus 2 into 5. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर. तो यहाँ 3y के बीच में, 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर. 3 is multiplied by y and I am replacing the y with its value 5. Okay, now here I have replaced the little y by its given value 5. Okay, now what is the step 2? Now perform the operations in the expression. और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए क्या करूंगी मैं? देखो मैंने क्या किया, 3 इंटू 5 15 प्लस 2 इंटू 5 10. मैंने बॉड मास को फॉलो किया, पहले मल्टीप्लाई होता है बॉड मास के अकॉर्डिंग. सो आई हैव मल्टीप्लाइड द नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. Now 15 plus 10 will be 25. After that I have performed the addition and
25 is the value of given expression. In this way, we evaluate the expression and value of given expression is 25. Okay. Now points to be remembered. An expression with only one term is called monomial. An expression with two terms is called binomial. An expression with three terms is called trinomial. An expression with more than three terms. You see, Mittens, math is the language of the universe. Mrow? It's how we calculate the trajectory of star beams and ensure cosmic harmony. Can you get it? Pi minus 22 over 7 is equal to what? A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You see, Mittens, math is the language of the universe. Mrow? It's how we calculate the trajectory of star beams and ensure cosmic harmony. Can you get it? Pi minus 22 over 7 is equal to what? A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meow. Exactly! Hey, hop up, nope, up, nope, up. Numbers are like toys. Play with them, and they reveal secrets. Almost done. Ta-da! Wow! Hello there, little guy. Come here. Oh, you're the best! Hello friends, today let us explore a new word. But before that I am telling you a short story. It will be interesting. These two ones feel lonely. You can see how sad they are looking. Now what to do make them happy? What could be? Just guess. What can be done to make them happy? Thinking? Okay. I guess you will say make them 1 plus 1 equal to 2. Will they make 1 plus 1 equal to 2? Oh no. Wait. This is not addition. Just remember, when you feel sad or boredom, what would you like to do? Just to go and join your buddies. Am I right? Then what? Then here is the secret. The secret word, concatenation. What does it mean? Don't add, just join. So they decided to stay together, and now they are feeling so happy. And through this story, we have explored the new word concatenation, which means don't add, just join. तो बताओ, concatenation में numbers friends बनते हैं या एक दूसरे में जुड़ जाते हैं? Let's see. 2 plus 3 equal to 5 or 2 plus 3 will be 23. Have another taste. Hello plus world becomes hello world. It means words also join together to make a new and fascinating words. Now it's your turn. Just try. 7 plus 8 equal to what? Answer in comment box. I will be waiting. Have fun. Bye bye. Today in algebra, our topic is algebraic expressions. Okay. In this video, I will
tell you what are algebraic expressions and parts of algebraic. A quick recap. As in last video, I have told you that literals and letters used to represent number. Their value may change, so they are called variables. Also, for example, x, y, z, a, b, etc. हम लोग कभी कभी अननोन वैल्यूज के लिए कुछ लेटर्स को यूज करते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती और चेंज होती रहती है. यूज ऑफ लेटर्स विल हेल्प अस टू राइट रूल्स एंड फॉर्मूले इन जनरल वे. Letters help us to determine the unknown values. Okay. Now, what are constant and variables? The values of literals changes according to the situations. So literals are called variables. Different situations में literals की values भी different हो जाती हैं, change हो जाती हैं. So they are called variables. Variables are represented by English alphabets. A, B, P, Q, R, X, Y, Z. कोई भी आप alphabets ले सकते हैं. Since the number in arithmetic always represent the same quantity, even in different situations, so the numbers are called constants. Means जो हम counting numbers use करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, वो हर situation में उनकी value same रहती है. अगर हमने 2 लिखा है, तो वो 2 ही रहेगा किसी भी situation में हम उसे अगर लिखते हैं तो. ठीक है. So they are called constant. Constant का मतलब होता है जिसमें कोई change नहीं होता, जो stable रहता है, स्थिर रहता है. So variables do not have fixed value, but constants have fixed values. What is algebra? A formula is written with the help of literals, constants and 4 basic operations. Means addition, subtraction, multiplication and division. जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं लिटरल्स को यूज करके, कॉन्स्टेंट्स और 4 बेसिक ऑपरेशंस जो है हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनका यूज करके जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं वो अलजेब्रा होता है. Actually, using literals in generalized results of arithmetic is nothing but algebra. Okay. Now, what is algebraic expression? Algebraic expressions including constants and variables combined by arithmetical operations are called algebraic expressions. अभी मैं आपको इसके आगे एग्जांपल्स बताऊंगी. तो ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं और जिन्हें हम अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो नाउ व्हाट इज अलजेब्रिक टर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, algebraic term is the part of expression separated by a plus or minus sign are called the terms of an expression. जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन ली 7xy minus 7y